इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लास्ट टाइम एक फॉर्मूला लिखा था, वो फॉर्मूला क्या था? टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम पीरियड। ठीक है। अब क्या होता है, ड्राइंग करने की भी अलग अलग कंडीशंस, जैसे मैं बुक के अंदर की दो कंडीशन थी। केस नंबर 1 क्या है आपका? when drawing is made monthly, when drawing is made regularly with fixed amount, with मतलब क्या हो गया कि ड्राइंग हो तो नहीं रेगुलरली, लेकिन उसका अमाउंट क्या है? फिक्स है, वो चेंज नहीं। क्लियर है ये बात? इसका क्या मतलब, जैसे मैं बोला मैं एवरी मंथ 10,000 विड्रॉ करूंगा, मंथ के स्टार्टिंग में करूंगा, भले मंथ के मिडिल में करूंगा, मंथ के, बट मैं 10,000 जो है वो विड्रॉ करूंगा। मेरा अमाउंट क्या हो गया? फिक्स हो गया। अब केस 2, when drawing is made with different amount and different interest, when drawing is made with different amount and different interest। पहले क्या था, ड्राइंग भी रेगुलर होगी और अमाउंट भी फिक्स। सेकंड कंडीशन में क्या है, अमाउंट भी डिफरेंट है और अलग अलग टाइम पीरियड पे ड्राइंग होगी। 2 महीने बाद ड्राइंग करी, 4 महीने बाद करी, 8 महीने बाद करी, ऐसे मतलब आपका टाइम पीरियड इक्वल नहीं और अमाउंट भी इक्वल नहीं, वो हुआ केस 2। और वो पहले वाला क्या है, केस भी इक्वल नहीं और अमाउंट भी है फिक्स। ठीक है। अब इसके अंदर आता है सबसे पहला नॉर्मल, तो मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया है। अब क्या करना है, ड्राइंग इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच कि जब वो ड्राइंग करें तब क्या कर रहे हैं, अमाउंट तो फिक्स है और ड्राइंग कर रहे हैं हर महीने के स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे क्या आएगा, टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 6.5 डिवाइड बाय 12। जैसे क्या ऐसे लिखा था ना, या क्या जाएगा 6.5। ठीक है। और यहाँ टोटल ड्राइंग का मतलब क्या होगा, टोटल ड्राइंग इक्वल टू ड्राइंग पर मंथ इनटू 12 मंथ्स। ठीक है, क्लियर कि जो भी हर महीने की ड्राइंग हो उसको किस में डिवाइड करेंगे, 12 मंथ्स। केस नंबर 2 में पूरा आपको पूरा लिखना है ना, एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, एट द मिडल ऑफ ईच महीने के बीच में करेंगे। तो फॉर्मूला पूरा वही लगने वाला है, लेकिन यहां से लगेगा 6/12। क्लियर। अभी कैसे 6 और 6 में लिखूंगा आपको, पर अभी लोग ये जैसे मेरे लिए आपके नहीं, आप खुद जाएंगे। ठीक है, लिखो उसका सुना पॉइंट नंबर 4। ठीक है, पहले था बिगिनिंग, फिर था मिडिल, अब है एंड। When the drawing is made at the end of the month, total drawing
रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 5.5 डिवाइड बाय, ठीक है। बात करो, चलो मैं एक साथ लिखता हूँ। बी, when the drawing is made at the beginning of each quarter, ठीक है। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? क्वार्टर में होता है ना, क्या होता है? हाँ मतलब 1/4 मतलब 3 मंथ, एक क्वार्टर होता है 3 मंथ। अब तो ये चलता है 12 मंथ, तो कितने क्वार्टर हो जाएंगे? 4 3 मंथ। उसको बोलो तो यहाँ ड्राइंग क्या होगी, हर 3 महीने में एक बार होगी, तब ये 3 मंथ्स के अंदर एक बार। यहाँ आ जाएगा आपका टोटल ड्राइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 डिवाइड बाय। अब यहाँ जो टोटल ड्राइंग आएगी वो टोटल ड्राइंग का मतलब होगा ड्राइंग ईच क्वार्टर इंटू 4, क्योंकि साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। ये है when the drawing is made at the middle of each quarter, ठीक है। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या रहेगा? टोटल ड्राइंग into rate of interest into 6/12, ठीक है। नेक्स्ट आएगा F, when the drawing is made at the end of each quarter, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट नहीं? तो यहां आ जाएगा आपका टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 4.5 डिवाइड बाय। क्लियर? बहुत अच्छे आ गया। अच्छे से ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है। एवरी 6 मंथ के अंदर ड्राइंग। ठीक है, मतलब एवरी 6 मंथ्स में ड्राइंग कर रहे हैं और वो भी शुरुआत से, ठीक है। तो आ जाएगा टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये मत बोलना सर हमारे कोर्स में ये है ही नहीं, एक टॉपिक दे दे इंटरेस्ट और ड्राइंग, मतलब उसमें सब चीजें हो। ये वाला ये आपको इंटरेस्ट और ड्राइंग दिया हुआ है, ऐसा कोई ऐसा नहीं है। टॉपिक अगर है तो उसमें जो भी क्वेश्चन है वो होंगे। क्या है 9/12? हाँ, तो यहाँ आएगा टोटल ड्राइंग इक्वल टू ड्राइंग ऑफ 6 मंथ इंटू सारी डिवाइड होगी एवरी 6 मंथ्स के अंदर, तो जो भी ड्राइंग हो इंटू ये जी है ना, ये एच।
when drawing is made at the middle of हाफ एरिया, ठीक है। इसमें तो आ जाएगा वही टोटल ड्राइंग इनटू रेट इंटरेस्ट इनटू 6/12। कोई भी शॉर्टकट यूज नहीं करेगा अकाउंट्स के अंदर। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इसमें लिखा होगा आरओआई, और आपको नहीं लिखना, बोर्ड में एक नंबर करके जाते हैं। आरओआई सिर्फ समझने के लिए, अपने भी टाइम बचे उसके लिए, एग्जाम के लिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है। आरओआई का दूसरा फॉर्म ये भी होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आप लिखोगे गलत होता है, ठीक है। क्लियर है। दूसरा, जब आप जनरल एंट्री करते हो अकाउंट्स के अंदर, जैसे आप कॉपी पढ़ोगे उसमें एंट्री नरेशन करना, तो एंट्री में तो नरेशन लिखना कंपल्सरी 1/4 मार्क होता है टोटल एंट्री के नरेशन में नंबर होता है। जैसे 12 नंबर पेपर है तो 1/4 2 से 3 नंबर नरेशन के होते हैं, तो नरेशन लिखना कंपल्सरी है। नरेशन नहीं लिखेंगे नंबर and drawing is made at the end of total drawing into rate of interest into 3/, ठीक है। अब आता है अपना सेकंड नंबर, है ना। when drawing is made with different interval and different amount। पहले में क्या था, अमाउंट इक्वल था और गैप का भी सीक्वेंस प्रॉपर दे रहा था। अभी क्या है, ये भी नहीं बताया कब ड्राइंग होगी और ये भी नहीं बताया कितनी ड्राइंग होगी, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। तो यहां पर कौन सा मेथड यूज आएगा, प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। प्रोडक्ट वो कैसे होगा, यहां सबसे पहले लिखा ईयर या फिर पीरियड। चलो यार हम एक काम करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सीरियल नंबर, ठीक है। फिर अपन लिखेंगे अमाउंट, फिर लिखेंगे पीरियड, और फिर लिखेंगे अपन ये आपके पास क्या होगा, गिवन होगा क्वेश्चन के, क्या होगा ये हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट इनटू क्लियर विदाउट। आप सबसे पहले ये पीरियड कैसे निकालोगे आप, इसका फॉर्मूला होता है डेट ऑफ ड्राइंग टू डेट ऑफ क्लोजिंग, इनके बीच का जो टाइम रेट होगा। जैसे मैंने 1 दिसंबर को ड्राइंग की, तो 1 दिसंबर से टाइम चालू होगा और हमारे घर लोग 31 मार्च, तो दिसंबर से मार्च वो जो टाइम रेट रहेगा 4 मंथ का, वो क्या आएगा, हर ड्राइंग का टाइम अलग होगा, तो उसी हिसाब से हमें इंडिविजुअल कैलकुलेट, कोई दिसंबर में की, किसी ने 15 अगस्त को कर दी, किसी ने 1 जुलाई को कर दी, अप्रैल को कर दी, तो वहां से जिस दिन से ड्राइंग की है उस दिन से लाकर जब हमारा ईयर क्लोज हो रहा है, अगर तो दिसंबर में हो सकता है 31 मार्च की, जो भी है वो उनके बीच का जो टाइम पीरियड हो सकता है, क्या करें, ठीक है। डेट ऑफ क्लोजिंग भी गिवन होगी, ये तो हमेशा तो 31 दिसंबर होगी या 31 मार्च, इसका किसी डेट नहीं हो सकता, ठीक है, हो जाएगा। फिर जब आप इंटरेस्ट निकालोगे
तो आएगा टोटल ड्राइंग, जिसको लिखेंगे प्रोडक्ट। ये जो आप निकालोगे ये सब नीचे क्या जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट, ये टोटल हो जाएगी, ठीक है, सम प्रोडक्ट से इनटू रेट ऑफ। और जब भी मैं आपका कौन सा फॉलो होगा, प्रोडक्ट मेथड फॉलो होगा, तो टाइम पीरियड कितना आएगा आपका हमेशा 12 मतलब 1 महीने का इंटरेस्ट देखिए। जब भी प्रोडक्ट मेथड फॉलो होगा ये टाइम पीरियड क्या जाएगा 1/। क्लियर, कोई डाउट? पक्का? ऐसे प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे।